Good morning, students. This is Mr.P.J.Titus. Today we are going to discuss about lesson number 5.3 as for 8th class. You might have think that where is then lesson number 5.2? So lesson number 5.2 is named as black aeroplane. Okay, as a black aeroplane, or the same chapter and the same content that is you can get in a 10th class. Okay, 10th class video, chapter number 3. So that is why I skipped it, and another lesson I have skipped, that is 4.4. No men are foreign. No men are foreign. So this is also a poem, and this poem also belong to 8th class. At the same time, it is belong to 9th class. In my 9th class video lecture, you can get this poem, all explanation and summary, etc. If you need question answer, so just I can make for you question answer. And according to black aeroplane, there is no any question answer, and there is only exercise. Okay, no, there is question answer is there. So anyway, so if it is necessary, so I will make a video for this lesson, and question if you require only question answer I will make. Whatever requirement is there, if you comment, then definitely I can do. But now I want to skip it, and I want to take a new lesson, that is lesson number 5.3, the man in the tunnel. The man in the tunnel. So this may be first part, or if it is possible, so I can make it within one video. Otherwise, it will be parted with two. So let's begin. The three of us, George, Albert, and me, used to meet every Sunday evening in the park, where we always told our stories. There were three friends. Okay, one's name is George, another name is Albert, and also they used to meet the narrator at the same time, George, Albert also. They meet together in a particular place, and every evening that is called a park, and they used to tell stories. हम यहाँ पे तीन दोस्तों को देखते हैं, जो नैरेटर खुद है, साथ साथ जॉर्ज, अल्बर्ट. ये सभी शाम के समय पे क्या होते हैं कि संडे को खास करके और इवनिंग के समय पर ये एक पार्क में इकट्ठा होते हैं. इकट्ठा होने के बाद फिर वो क्या करने लगते हैं, स्टोरी बोलने लगते हैं, बात करने, मतलब एक के बाद एक ये स्टोरी बोलने लगते हैं. तो द बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ द इवनिंग वाज एंटरटेन्ड विद अ फ्री लार्ज केक एंड बर्गर एट MC Donald's of KFCS. So that means one who will say good story, okay, he will be gifted by others. Okay, जो कोई अच्छा स्टोरी बोलेगा तो उसको क्या किया जाएगा, इसको एक अच्छा केक के साथ उसको गिफ्ट किया जाएगा. George used to tell very good stories, and he had offered on his cake and burger, Albert and I thought our story
stories were also good, but those told by George were usually better. Three of them, narrator, George, and Albert. Okay, every Sunday they used to tell stories, but George's stories is something high, and that is something natural, and that is something interesting to hear. Okay, so here the narrator says my story and Albert's story, that is also something good, but interesting is a जॉर्ज स्टोरी. तो यहाँ पे नैरेटर कहता है कि जॉर्ज जो है उनका दोस्त, ये तीनों जब कहानी कहते हैं तो हर बार जॉर्ज का स्टोरी अच्छा लगता है और वो क्या करता है कि विनर बन जाता है. हालांकि हमारा स्टोरी, मेरा यानी नैरेटर का, और उसके साथ साथ जो अदर उसका फ्रेंड फ्रैंकलिन और अदर अल्बर्ट, ये जो है मतलब इनका स्टोरी भी अच्छा है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्टोरी जो है जॉर्ज का ही अच्छा लगता है. दे आर ऑलवेज फुल ऑफ मिस्ट्री and suspense of all the stories he had told so far. We thought his story of the man in the tunnel was the best. तो जॉर्ज ने जो स्टोरी कहा है तो वो बहुत मिस्टीरियस स्टोरी, रहस्यात्मक स्टोरी, और साथ ही साथ उसका जो स्टोरी वो बोलता है मतलब कुछ इस प्रकार स्टोरी सुनाता है. तो सबसे अच्छा स्टोरी जो है हमें ऐसा लगा था द मैन इन द टनल. ओके, द मैन इन द टनल. तो ये स्टोरी सबसे अच्छा लगा था. कह के कौन कह रहा है? नैरेटर, सॉरी, especially the narrator says over here. The story as told by George is reproduced here. तो जॉर्ज ने जो स्टोरी कहा उस स्टोरी को यहाँ पे बताया जाता है कि अभी स्टोरी शुरू हुआ है ना. Now the story began. What George is telling that I will read for you at the same time. I will translate it also for you. One evening I was on my way home from work. That was when I lived south of the river and worked in a bank on the other side of the river. तो वो यहाँ पर कहते हैं कि एक इवनिंग का समय था और उस इवनिंग के समय पर वो अपने काम से घर की तरफ आई वॉज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क. घर से वो अपनी काम की तरफ जा रहे थे और that was when I lived south of the river and worked in a bank of the other side of the river. So river का साउथ साइड में वो रहते थे और दूसरी साइड में, रिवर का जो दूसरा साइड में वो अपना कार्य कर रहे थे. यानी किसी ऑफिस में हो सकता है या तो फिर किसी फैक्ट्री में हो सकता है, वो कार्य करते. He used to live southern part of the river and just opposite of the river. Okay, after crossing of the river, he walked and especially in the bank of a river. Okay, so other side, that is other side. He might be working in a factory, either some office, we do not know, but he says that his work is other side of the river or bank of the river. Okay, so then after what happened here, I used to go on my motorbike through the tunnel under the river. रिवर के अंडर में जो टनल हो रखा है उसी टनल में ही मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ. It was an evening in the winter and very late. It was foggy also. You know, it is usually foggier near the river. On my way back home, I went along river road, and then while going through the tunnel, I saw something unusual. George कहता है, here George says that, okay, so he always cross the river, and especially when there is winter season,
and there is fog. The area is absolutely foggy nearby the river. वो ये कहना चाहता है कि रिवर के पास जो भी एरिया होता है वो एरिया अक्सर सर्दी के समय में और भी फॉगी हो जाता है और भी कोहरा हो जाता है. So anyhow, but he usually forget near the river. किसी भी तरह से हो वो यूजुअली उस रिवर में से होकर के ही उनको जाना पड़ता है. उनके पास एक मोटरसाइकिल है. वो मोटरसाइकिल से वो क्या करते हैं कि टनल को क्रॉस करते हैं. ओके, टनल को वो क्रॉस करते हैं और उसके बाद उनके जीवन में एक बार एक अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ. मतलब एक अजीब प्रकार की घटना उन्होंने देखा. There was a man in the middle of the road. He was standing at a place where he could cause an accident. The man could get knocked down or even get killed. Looking at him angrily, I applied the brakes and stopped in front of him. What was the unusual thing? Okay, when Judge was going on his way, he has seen a man who seems to, met with an accident and he was absolutely a little bit injured and he is stopping to his bike. जैसे वो आ रहा है और जज आ रहा है तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति है जो मतलब एक्सीडेंट हुआ हो उसका, और इसी प्रकार का एक व्यक्ति रोड के उस बीच में खड़ा होता है और जज को वो क्या करता है, रोकता है. ठीक है, जज को रोकता है और जैसे जज को रोकता है तो जज तुरंत क्या करता है, ब्रेक लगा देता है वहाँ पे. ओके, वो तुरंत वहाँ पे ब्रेक लगा देता है. मतलब गुस्से में आकर कि वो थोड़ा इधर उधर होने जैसा हो रहा है. वो रोक तो रहा है और उसके साथ रोड में इधर उधर होने जैसा हो रहा है. कैन टू बी ए लिटिल केयरफुल. जज उससे कहता है क्या तुम थोड़ी केयरफुल नहीं हो सकते? आई सेड, Oh, I am very sorry, said the stranger, but I have had an accident with my car and I must get home quickly. Live on the other side of the river and it's not far from here. Could you please take me with you? तभी यह अजनबी व्यक्ति, that stranger person, okay, he apologized and he said that so I have met with an accident and my car accident, so please help me, okay, to to pass me the other side of the river. तो वो यही कहता है ये अजनबी व्यक्ति उसको कि मैं जो हूँ एक्सीडेंट मेरा हो गया, मेरा कार का जो एक्सीडेंट हो गया, और कृपया करके मुझे इस नदी को पार करवा दो. क्या मुझे आप अपने मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने के लिए इजाज़त देंगे? उसने अपना एड्रेस भी बता दिया कि कहाँ पर उसको उतरना है. तो ही टोल्ड मी हिज एड्रेस एंड ट्रूली इट वाज नॉट फार फ्रॉम देयर. वो जिस प्रकार का एड्रेस को बताया था वो एड्रेस के आधार पर वो जगह इतना दूर भी नहीं था. The street where he lived was only a short distance from my home. जिस स्ट्रीट में वो रह रहा था, नैरेटर कहता है कि है ना वो उसके बिल्कुल पास है, यानी जज कहता है कि वो स्ट्रीट उसके बिल्कुल पास है. ओके, आई सेड सर बिहाइंड मी एंड बी केयरफुल. फिर उसके बाद जज उसको कहता है कि ठीक है मेरे पीछे बैठ जाओ लेकिन केयरफुल के साथ बैठो. The stranger got on and we started. At the time there wasn't much traffic in the tunnel and it was all very quiet. I tried to talk to the man behind me. I told him something about my work and where I lived, but he didn't answer. So here what happened there? He gave the place, means the judge accepted his request, the stranger man's request, and finally that fellow
sat behind him, and he knew very clearly, judge knew very clearly, the street is very near of his residence. So that is why he started to talk with him, and he said about his work, about his occupation, everything he started to speak. And while they were riding, you are speaking, but there was no any answer. तो जैसे ये अजनबी व्यक्ति उसको रोक लेता है, और रोकने के बाद फिर क्या होता है कि वो उसको पीछे बैठता है, और जज उसको पीछे बैठने के लिए इजाज़त देता है। ओके, तो ये दोनों चलते हैं, आगे बढ़ते और थोड़ा सा वो अपना परिचय देने लगता है, और उसे पता है कि ये व्यक्ति जिस एड्रेस दिया उस एड्रेस से उसका घर जो है बहुत ही नज़दीक है, उसका घर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, उसको पता है इस बारे में। तो वो अपना परिचय दिया, अपना परिचय देने के साथ साथ फिर वो ऐसा करता है कि उसके साथ कुछ बातें करने लगता है, अपना नौकरी के बारे में कुछ बताता है, लेकिन उत्तर कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे उसको कोई उत्तर नहीं आता है, while driving on the other side of the river, I stopped at crossroad। जैसे रिवर पार हो गया और तभी क्रॉस रोड आ गया, और वहाँ पे जज ने क्या किया, अपना मोटर बाइक को वहीं पर रोक दिया। Would it be okay for you to get off here? I asked। उसके बाद जज उसको पूछता है कि क्या तुम्हें इतने में सफिशिएंट है, क्या इतने में तुमको छोड़ दो तो सही रहेगा? The stranger didn't speak. I turned to look at him. He wasn't there. Where was he? जैसे पीछे की तरफ जज देखता है तो वो व्यक्ति और नहीं था वहाँ पे, तो फिर वो व्यक्ति गया कहाँ पर, इसके बारे में हम कल देखेंगे कि वो व्यक्ति गया कहाँ पर, व्यक्ति दरअसल कहाँ था, और ये किस प्रकार का मिस्टीरियस और सस्पेंस स्टोरी है। ये सब चीज़ हम कल पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। तो थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू। अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन भी दबा दे। may गॉड ब्लेस यू।